Everyone, we are here at Milton Sports Center और मैं आपका होस्ट और दोस्त हमजा इलाही पाकिस्तान प्रोफेशनल फोरम की जानिब से यहाँ पे एक Bring Your Own CV इवेंट हो रहा है जिसको N6 एज अ मीडिया पार्टनर कवर कर रहा है। हम यहाँ पे मौजूद हैं और दिखाते हैं आपको कि पाकिस्तान प्रोफेशनल फोरम ने किन किन टॉपिक्स को टच किया और क्या हो रहा है। थैंक यू। और हमारे साथ मौजूद हैं सलमान अयूब साहब जो कि प्रेसिडेंट हैं पाकिस्तान प्रोफेशनल फोरम के, और पूछते हैं थोड़ा सा उनके बारे में और थोड़ी सी ब्रीफ हिस्ट्री लेते हैं पीपीएफ के बारे में कि कैसे फॉर्म हुई और यहाँ पे क्या हेल्प मौजूद है कम्युनिटी के लिए। सलमान, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग N6। हम आपके मीडिया पार्टनर हैं और अपने बारे में बताते थे। So, as you know, like president of PTF, this group. So I landed here about 7 years back. Or as everybody else, like had the challenges. I'm a mechanical engineer and took me some time. So मुझे कुछ time लगा industry में enter होने के, and then I realized कि यार क्योंकि हमारे बात हमसे कंपनी चाहते हैं यहाँ पे लोगों की जो challenges लगते हैं उनके हम कैसे help कर सकते हैं। And I think जो already लोग यहाँ पे settle हैं उनको बहुत कम टाइम में बहुत ज़्यादा मेजर इम्पैक्ट हो सकता है न्यू कमर्स की लाइफ पे। तो इसलिए हमने ये ग्रुप स्टार्ट किया था इनिशियली विद सम डिफरेंट नेम एंड देन वी गॉट मर्ज विद अनदर। So I'll talk more about PPF because I think my story is not as important as PPF, right? So PPF started in early 1990s with the exact same concept. At that time there was no internet wasn't as mature as it is now, right? In early 1990s. So the concept was exact same, to help the newcomers get into job market, teach them the local Canadian ways of job hunting and to guide them about the sector here. So that's how it started. And when we took on, we kind of modernized it and kind of brought the internet and social media aspect of it. So yeah, the mission and vision is exactly same, and we are continuing doing that, helping newcomers get into the job market, teach them how to make resumes, get them referrals, tell them about the industry, tell them about the projects. Yeah, and that's what we do. And this platform is actually what enables all that, right? People from society gathering together and helping each other. This is basically the platform helping. Thank you very much, Salman. ये है brief history PPF की और हम अब आपको वापस ले जाते हैं। Thank you. Cover the next few slides, Umar, if you want to tag team with me. तो उमर, अगर किसी ने ज्वाइन करना हो पीपीएफ कैसे करते हैं? Assalamu alaikum everyone. I think इस पे information mention है, but can you next slide? So these are our like social media platform. First is Gmail, second is LinkedIn, and third is Facebook. और उसके अलावा we have a dedicated point of contact, SAF. Our number है इस पे, you can reach out to SAF as well. और push. So we also have our WhatsApp group. active participation होती है, तो this is a registration form that we will be sending out after the event. So I was told a couple of hours before there are some members right now who are not part of PPF as of yet, Salman and Umair, but inshallah we would love to have you on the group. आप लोग participate करें, कोई आपके पास job postings है वो share करें. At the end of the day we want to break that myth कि पाकिस्तानी की help नहीं करता. We don't believe in that, and this is a testimony to that. So please join in. और दूसरी चीज़ ये कि we discussed about the needs of the organizations which is growing. So today we are formally launching our call for volunteers. As you can see, we want to hire for all of these positions. By the way, these are all volunteer positions. तो आप ये expect करें कि आपको कोई pay मिल रही है, just again making it very very clear. We are at the end of the day operating as a non-profit. We haven't registered ourselves yet. We were registered back in the day, but we had one register for whatever reasons. So for now, we're not registered. Just again making it clear. However, we do expect 6 to 8 hours per month of volunteer service for a term of up to 2 years. और इसके अलावा सारी पोजीशंस हमारी रिमोट होती हैं अनलेस इस टाइप का कोई BYOC इवेंट है जिसके अंदर आप तो यू नीड टू बी हियर इन पर्सन.
और उसके अलावा जो है एक्सपेक्टेशन ये है कि जो भी इनमें से रोल्स हैं उसकी खास अपनी अपनी जेडी होगी, आप उस हिसाब से हेल्प आउट कर रहे हैं। कुछ पीपल मैनेजमेंट रोल हैं, कोई इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर रोल्स हैं, लेकिन ऑन टॉप ऑफ दैट दी एक्सपेक्टेशन एटलीस्ट आप एक स्टेटस मीटिंग ज़रूर अटेंड करें ताकि आप अपनी डिटेल्स वगैरह जो भी आपकी अपडेट्स हैं वो आप शेयर करें। और इंटरव्यू प्रोसेस बहुत सिंपल है। मोस्ट लाइकली इट्स गोना बी 2 राउंड्स, वन ऑफ दीज फेसेस, और आइडिया ये है कि वी जस्ट लुकिंग फॉर a serious commitment, not like कि chill है, पाकिस्तानी organization है, ऐसा नहीं है। At the end of the day we do take this job very seriously. Umar, anything more you want to add to that? जिस तरह सैफ ने बात की, 2 मिथ थी हमारी मेरे ख्याल से। एक तो मैंने क्योंकि आई वर्क विद टेलन और सदर की हैं मिथ, ये तो वहाँ पे था हमारा करो मुमकिन। तो चीज़ ये है कि लेट्स मेक इट करो मुमकिन। रेफरल मैटर नहीं करता, आपकी रेज्यूमे मैटर करके ना आपका अपना स्किल सेट क्या वो मैटर करता है। टू बी ऑनेस्ट मेरे हाथ से हम लोगों ने उसको रिवैम्प किया है कि सप्लाई चेन आईटी जो टिपिकल रोल थे, इसमें हाईएस्ट लोग एचआर मार्केटिंग में प्लेस, इवन आई थिंक कुछ लोग रेगुलेटरी लॉ में भी प्लेस हुए हैं। तो उस चीज़ को कंटिन्यू करें। आई अंडरस्टैंड कि गिविंग रेफरल इज़ योर पर्सनल डिस्क्रिप्शन, इफ़ यू फील कंफर्टेबल प्लीज़ गिव इट, अदरवाइज कोई इसमें फोर्समेंट नहीं है। मेरे ख्याल से यही हमारी सक्सेस स्टोरी है। और वी हैव पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट यहाँ पे हैं इन फॉर्म ऑफ एसएमई। टू बी ऑनेस्ट जो इसमें हम लोगों ने एक मेजर रीवैम्प ये किया था कि ऑल्दो वी हैव अ सीनियर मेंबर लाइक एसवीपी काशिफ मार्वी, बिफोर के सिमंस या नोटरी के सीईओ आए और वो आके स्पीच दें जिसमें लोग बोर हों या मोटिवेशन ना मिले, हम क्यों ना एनेबलर्स को लेके आएँ। और आखिरी बात ये कि इट्स नॉट अ पॉलिटिकल कमेंट, टीपीएफ किसी भी रोल मनाए सेंट्रिक नहीं है। फॉर्चुनेटली वी हैव सैफ जो कि चैप्टर के प्रेसिडेंट हैं, राफेल यहाँ मौजूद हैं, इस फास्ट कैनेडा चैप्टर प्रेसिडेंट। तो जितने आप अलुमनाई का पार्ट हैं, तो जैसे मैट्रिक के रेड ब्रिक्स है, आप आईवी से पढ़े हुए हैं, आप कोमल से पढ़े हुए हैं, जहाँ से पढ़े हुए हैं, इफ़ यू इन अ पोजीशन टू हेल्प एनी पाकिस्तानी प्लीज़ कम फॉरवर्ड। रेफरेंस की ज़रूरत नहीं है, रेज्यूमे ट्वीक करने की ज़रूरत नहीं है, कैनेडियन एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है। सो जस्ट टू गो थ्रू दिस, इसमें बहुत सारे लोगों के सिर्फ फर्स्ट नाम इसलिए हैं कि बहुत सारे लोगों का ये प्रॉब्लम है कि जी हम ग्रुप में नहीं शेयर करना चाहते, हमारी फुफो का बेटा ग्रुप में, हमारी भाभी ग्रुप में, तो हम स्टोरी नहीं शेयर करना चाहते। तो जो आप ग्रुप में स्टोरीज देखते हैं दे आर 20% ऑफ द एक्चुअल स्टोरीज। बाकी लोग तो हमें एनोनिमस भी नहीं पोस्ट करने देते। वो कहते हैं जी कि हम आपको बता दें कि हम किस कंपनी में जा रहे हैं, किस रोल पे जा रहे हैं, किसी को रेफ़र करना हो कर देंगे, ग्रुप में नहीं डालेंगे, नज़र लग जाए। सो एनीवे सर, लास्ट इवेंट वाज 8th of July. दिस काउंट इज़ फ्रॉम Jan of 2023 जब मैं ग्रुप में आया था, उसके बाद का है। इसमें भी 7 लोग मिसिंग हैं जिनको सलमान ने ब्रूस पावर में हायर करवाया। सो द नंबर इज़ एक्चुअली 101। सो उसी का हम आज केक कटिंग कर रहे हैं इंशाल्लाह। इंटरेस्टिंगली अगर आप देखिए, मेरी अपनी फील्ड सप्लाई चेन है वो यहाँ पे, ठीक है सर। ऑल दोज पीपल फाइनेंस एंड अकाउंटिंग, द हाईएस्ट नंबर इज इन मार्केटिंग। मैं अभी रिमशा को बता रहा था कि मुझे कहा गया था मार्केटिंग में गोरे के अलावा किसी को घुसना ही नहीं देता, इतना बायस है यहाँ पे। द हाईएस्ट नंबर इज इन मार्केटिंग। रिमशा माशाल्लाह गॉट अ जॉब बिफोर लैंडिंग इन कैनेडा इन मार्केटिंग, 1 month before that. Shehbaz is not here today. There is a name here, Shehbaz, here. He's mashallah director supply chain at Galderma. He landed a job paying north of 200,000 2 months before landing. He's a director supply chain here. So ये सब लोगों को आने से पहले जॉब्स थे। इनमें से किसी को रेफरेंस नहीं चाहिए था, किसी को रेज्यूमे ट्वीक नहीं करना पड़ा। अक्सर लोगों के पास कैनेडियन एक्सपीरियंस छोड़े सेन नंबर भी नहीं था। 43 out of these 94 लैंडेड अ जॉब बिफोर लैंडिंग। 2 लोग अभी यहाँ मेंशन नहीं है, उन दोनों के इस वक्त पाकिस्तान में इंटरव्यूज हो। सो दिस इज ऑल पॉसिबल, जस्ट वर्क ऑन योर रेज्यूमे। आप ग्रुप में भी यही बातें सुनेंगे, दैट्स द माइंडसेट वी ट्राइंग टू ब्रिंग। बिगर चेंज इज जो सलमान और मैं कोशिश करते हैं हर वक्त प्रोपोगेट करने की, वी पाकिस्तानीज डू हेल्प ईच अदर आउट। सिर्फ हमें कनेक्ट करने की ज़रूरत। तो अभी मैं जितने लोगों से बात कर रहा था, मैं उनको ये कह रहा था इस इवेंट का पर्पस ये है कि प्यासा कुएं के पास हो जाएगा, हम सारे कुएं खींच के यहाँ पे ले आए। अभी आपको एसएमईज यहाँ पे नजर आ जाएंगे। आपका काम है, जितना पानी आपने पीना है वो आपका काम। सो वी हैव ब्रॉट एवरीवन हियर। आपको क्रॉस इंडस्ट्रीज लोग मिलेंगे, आपको रिक्रूटर्स मिलेंगे। यू जस्ट नीड टू टैप इनटू देयर नॉलेज। इफ यू कैन गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। सो दीज आर द कंपनीज जहाँ हमारे लोग, ये जो पिछली स्लाइड थी, द लास्ट स्लाइड, इन कंपनीज में वो लोग काम कर रहे हैं। इन कंपनी से उनको ऑर्गेनिक एप्लीकेशंस पे इंटरव्यूज आए हैं।
without a single reference. इसमें गवर्नमेंट की कंपनीज भी हैं. गवर्नमेंट ऑफ ओंटारियो इज माई सेल्फ. गवर्नमेंट ऑफ ओंटारियो ने मुझे डायरेक्टर सप्लाई चेन के लिए इंटरव्यू किया था 2 महीने पहले, विदाउट एनी रेफरेंस, विदाउट चेंजिंग माई रेज्यूमे. सो ये आपको ऑटोमेकर्स भी नजर आएंगे, आपको सीपीजीज भी नजर आएंगी, आपको रिटेलर्स भी नजर आएंगे. People are working there. People were interviewed by these companies without any referrals. So आज तक आपने जो बातें सुनी हैं, रेज्यूमे को ट्वीक करो, रेज्यूमे 1 पेज का होना चाहिए. आई डोंट नो कौन से कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है ये. आपको कैनेडियन एक्सपीरियंस चाहिए, आपको रेफरल चाहिए, निकलते हुए बाहर गार्बेज बिन है, प्लीज़ ये आइडियाज़ वहाँ फेंक के जाइए. यू डोंट नीड एनी ऑफ दैट. थैंक यू सो मच. Expert, I would request if you can recognize them, but I will try to name them. Anas Kodal, he is again a role model, a medical graduate, लेकिन उन्होंने ट्रांजिट किया टू डिजिटल मार्केटिंग. तो एक मिथ थी कि कनाडा में जो इंटरनेशनल मेडिकल ग्रेजुएट्स हैं, मेडिकल के, डेंटिस्ट के, फार्मासिस्ट में चैलेंज होता है, तो ही इज़ अ रोल मॉडल फॉर दैट. वर्किंग विद GST फ्रेंडली. शमरोज रूबीकॉन में डायरेक्टर मार्केटिंग है, प्राइसिंग में कंट्रोल करते हैं रमज़ान में यहाँ पे पाकिस्तान की तरह. Mirza Fahad Beg, working with TD as a Scrum Master. Then we have Saiful Haq. Saiful Haq is also a technical program manager with Walmart. Farhan Khwaja यहाँ पे मौजूद हैं, senior project manager हैं, working with one of pharmaceutical I think so. Again के पास ये one opening as well. I cannot disclose it, so you can reach out to him. उसके बाद हमारे पास सलमान अयूब हैं. He is working with Bruce Power. और सेल्स और मार्केटिंग में रिमशा हालिद यहाँ मौजूद हैं. हसन जावेद ने रिसेंटली सैमसंग ज्वाइन किया है. और उसके बाद आरिफ मलिक साहब से आपका इंट्रो हो गया. नदीम अकबर साहब मौजूद नहीं हैं, वो भी कंसल्टेंट हैं, बताए भी हैं. सदफ सईद इज़ अ पार्ट ऑफ TD लीडरशिप. और अली साकिब यहाँ मौजूद हैं. इसके अलावा फहद इकबाल साइबर सिक्योरिटी के सब्जेक्ट गुरु हैं आई वुड से. उसके बाद शुएब हसन यहाँ मौजूद हैं. शुएब इज़ SAP, FICO and SITE, other module as well. Kashif Marvi Saab is a Senior Vice President with Citibank, Internal Audit particularly, but you can reach out to him for any banking referrals for Citibank. Or we have our champ Umair Ayub, who's a supply chain and a myth buster, I would say. So that's part of it. Or I would like to हमारे स्पॉन्सर्स हैं जिसके बाद ये पॉसिबल हुआ, टू बी ऑनेस्ट, बिकॉज वी आर स्टिल गोइंग ऑन नो प्रॉफिट नो लॉस बेसिस. सो हमाद हादी यहाँ मौजूद हैं, बिग इंश्योरेंस के. हमाद का भी एक आई वुड से एक रोल मॉडल है. इज़ ऑल्सो ग्रेजुएट, अंडर ग्रेड फ्राम लम्स, दैन मास्टर्स फ्राम लम्स. और रिवायत आई गेस लम्स से ग्रेजुएट है जो कि जॉब नहीं कर रहे, तो गो फॉर एंटरप्रेन्योर जॉब पे रख रहे हैं. हाँ जी, तो दैट्स एन अगेन मॉडल. थैंक यू हमाद. मैच के हमारे हसनैन हैं, उनकी अभी रिप्रेजेंटेशन नहीं, लेकिन उनके यहाँ पे नदीम इकबाल यहाँ मौजूद हैं. थैंक यू नदीम भाई. नदीम इकबाल इज़ ऑल्सो अ सीनियर मेंबर ऑफ ICAP इंस्टीट्यूट ऑफ पाकिस्तान. और उसके बाद हमारे जो गोल्ड मेंबर हैं इमर्जिटल, आई थिंक माहाम, अकबर खान, देयर ऑल्सो प्रेजेंट हियर. काफ़ी इमर्जिटल लिए थोड़ी तालियां और कर दें, उन्हें खाना स्पॉन्सर. So food is sponsored by Emergitel. For coming out. Mashallah, we have an amazing attendance today. अभी कुछ लोग लेट हैं पाकिस्तानी स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से, लेकिन around 82 people today, mashallah. This is a new concept that we started. It's called Bring Your Own CV. The idea is कि एक हम एनुअल इवेंट तो करते ही करते हैं, लेकिन ऑन टॉप ऑफ दैट फिर हमने सोचा कि यार डिफरेंट सिटीज़ के अंदर लोग होते हैं, उनका फीडबैक होता है कि यार हमारे लोकली भी जो है हमारी ये जो कम्युनिटी है इसको मोबिलाइज करें. तो दिस इज़ वेयर दैट आइडिया केम अलॉन्ग फॉर रीजनल मीटअप्स. So this is our third iteration of BYOC, and this so far is the biggest BYOC. And as you can tell, like because of the space constraints, we are a little bit limited. But now we would have obviously welcomed a little bit more people. Acha, in terms of the agenda today, real quick, Salman, who is our president of Pakistani Professionals Association, Forum, is going to kick it off. Introduce the sponsors, introduce what the organization is all about, some of the success stories that we've had this year, and then I'm going to call for volunteers because the organization is growing. The demands of the organizations and the needs of the organizations are changing. तो हमें और लोगों की ज़रूरत है. आप देख रहे हैं रोज़ व्हाट्सएप के ऊपर, लिंक्डइन के ऊपर, फेसबुक के ऊपर धड़ाधड़ काम चल रहा होता है. We need like people around
I'll go into the details, but like we need a lot of people to help out with the functioning of the organization. उसके बाद आरिफ साहब आएंगे, वो हमारे आज के गेस्ट स्पीकर हैं. He's going to deliver a short lecture. After that, we will open it up for networking. But just before that, we request you to just stay put. We want to celebrate our 100 success stories, mashallah, today. Thank you, Salman. Thank you, Meher. And thank you, Umar Muzaffar. Thank you, Umar Muzaffar. अच्छा जी, और उसके बाद जो है वी विल ओपन इट अप फॉर नेटवर्किंग. और घबराने की बात नहीं है, अगर आपको भूख लगे तो खाना मिलेगा आज. ठीक है जी, चले सलमान, ओवर टू यू. थैंक यू. Okay, so about PPF. So this should be a mix of English and Urdu. So yeah, start with here in 1990s by our elders. Actually, we can say they were the immigrants before us. They started it, and their mission and aim was same, right? Like to help newcomers, help the community to do better in professional life, in their profession, to grow. To get into job market, and I think most of us have gone through those pains, right? Securing the first job, so we know that, right? We all of us know, and we are here for supporting the newer comers or those who are looking for jobs or grow in their career. So that's what it was created, right? It started in 1990s. The demographics of this organization have been changing, and we are trying to be more inclusive, like in terms of gender, profession, industries. We are trying to be more inclusive in all these terms, right? So that's what we are about, PPF. So more than 4,000. We have a LinkedIn group where you can see like we have more than 4,000 professionals there from all the industries. Finance has been one of the prevalent one. Move on to next slide. Yeah. So the vision and mission, as I talked about it briefly, the vision is like become the primary North American platform servicing Pakistani professionals, and that's what we are doing. Mission, supporting Pakistani professionals in their career. So that's what is our mission and vision. How do we do it? We are a platform that we are basically giving everybody the platform, right? We give the opportunity for Pakistanis to connect among themselves. Like there are other platforms as well, right? Like for different communities, and this is for Pakistanis, and it's singularly focused on professional growth and professional health. We are trying to do better by focusing on different areas and different industries. So we have been focusing on that. That's where we are growing right now. And as Safi said, we need volunteers for that. We are trying to be more structured in our support. And if you guys are following us on WhatsApp, you guys must have seen the success with the help of Umar. Umar has been really active and doing a really great job. So we had successes before, but the rate of success has recently increased significantly. So I would like to move forward here. Before Umar will come and talk about success stories, but before that, I just want to give one generic message. It wasn't part of my presentation, but while coming here, I thought I will share one weakness we generally, we people like Pakistanis have. It's a generic, and I think that's one of the important things we need to change and take it with like that's my opinion on it, right? So we are typically very competitive people. We Pakistanis are very competitive, and it's a good quality in general. But when it comes to teamwork, sometimes we miss the point and we remain competitive within teams. So we need to shift the perspective of being more cooperative in teams. And all of us are smart people. When we go to workplaces, the people of our bosses, they are smart people. They can see through, right? So always, like, and it's a generic message. I thought I would just give it that. Let's try to be more cooperative where we work, where we volunteer, or in societies, right? So when we cooperate, it pays off eventually. So let's try to be more cooperative. With that message, I will hand over to
अब हमारे साथ मौजूद हैं नदीम अकबर जो कि कंजर्वेटिव कैंडिडेट ब्रैकेट से। नदीम, आप पाकिस्तान प्रोफेशनल फोरम पे आज शामिल हुए, कैसा फील कर रहे हैं और कैसा पाया है? थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह इट वाज ग्रेट। काफ़ी लोगों से मुलाकात हुई, तो मेरे ख्याल में ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है और इस तरह के पहले भी होते रहे प्रोग्राम और आइंदा भी होने चाहिए। तो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड आइडिया कि आपके जो यंग प्रोफेशनल्स हैं, जो ऑलरेडी मार्केट में लोग हैं, जो हम जैसे लोग हैं, वो हेल्प कर सकते हैं। और मैंने देखा है यहाँ पे काफ़ी लोग एक दूसरे को मिल रहे थे और काफ़ी इंफॉर्मेशन शेयर हुई और इसी तरह कनेक्टिविटी बढ़ती है। इसी तरह आप अपने लोगों को हेल्प कर सकते हैं और ला सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। और इसका मतलब है कि ये फॉरम आगे जाएगा जिस तरह आप उसको सपोर्ट करते रहे। इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह डेफिनेटली हम हर लिहाज से हर तरह से सपोर्ट करेंगे और कर भी रहे हैं। और मेरे ख्याल में इस तरह के सेशन मज़ीद होने चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग कनेक्ट। It was very nice seeing you in the event. I'm really fond of Nadeem Akbar साहब, is a really good friend of mine. I'm really fond of him. इंशाल्लाह हमारी और मीटिंग चलती जाएंगी। But back to the studio. Thank you very much.